हाँ जी, मैंने आपसे परसों बात किया था आपका ये डिस्प्ले ब्लैंक इश्यूज के लिए मैक पे, आई एम सॉरी आईफोन पे। और मैंने आपसे थोड़ा टाइम मांगा था। Hello viewers, this is my third video about iPhone 13's screen replacement. I have updated to the latest version of 17.4.1 and after that my screen got black. Only two green lines are visible at the top of the display. I had emailed Apple and they contacted me over phone and they confirmed that they will not give me any replacement for my screen damage as the phone is out of warranty. Earlier I had told them that it is not my fault. The display got black after the software update, that is 17.4.1, and they took some time to respond to my queries, and after 4 days they called me and they told me that I have to bear the cost of screen replacement. हाँ जी, मैंने आपसे परसों बात किया था आपका ये डिस्प्ले ब्लैंक इश्यूज के लिए मैक पे, आई एम सॉरी आईफोन पे। और मैंने आपसे थोड़ा टाइम मांगा था। सो यहाँ पे सपोर्ट बहुत लिमिटेड आ रहा है। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन आसन जी। आउट ऑफ वारंटी है ना, इसीलिए यू नो इस तरह का सर्विस बता रहा है। अच्छा, तो क्या नहीं हाँ मिलेगा जी। रिप्लेसमेंट? वही सर, डिवाइस तो पेड बेसिस में ही हो सकता है, लेकिन विद इन वारंटी इसका सपोर्ट नहीं होगा। ये हमने थोड़ा टीम से डिस्कस करके कंफर्म किया, और मैंने ये भी बोला कि आप रेडी है इसको डिवाइस को फिक्स करवाने के लिए, बट ऑन अ पेड बेसिस, क्योंकि अभी आप फिक्स करेंगे तो आगे का वारंटी भी वही आपको 3 महीने का वारंटी मिलेगा, बट वो पेड बेसिस में ही मिलेगा। क्योंकि जब डिवाइस आउट ऑफ वारंटी होता है तो आपका सीरियल नंबर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये एक ग्लोबल वारंटी है। आप कहीं पे भी जाइए 1 ही साल का वारंटी मिलेगा इसका। और हमारे तरफ से एक्सेप्शन की अगर हम बात करेंगे ना, तो सोच लीजिए अगर आपको आउट ऑफ स्टेशन है, कोई नो आउटिंग में है ऐसा कुछ, तो आप आने में वारंटी के अंदर डिवाइस को सबमिट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पे आप ना हम आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में। बट यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो आपको मालूम है डिवाइस कब लिया था आपने, याद है? डेट याद है? February 22। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हुआ है ना, तो इसीलिए सपोर्ट बहुत लिमिटेड है। अगर एक दिन या एक हफ्ते के अंदर ऐसा कुछ है तो हम कुछ कर सकते हैं। ये 1 साल से ऊपर चला गया है ना, तो वही थोड़ा दिक्कत है सर। लेकिन मैंने तो लिक्विड डैमेज या फिर ड्रॉप नहीं किया, ये तो सॉफ्टवेयर के कारण हुआ है, वो तो आपको कंसीडर करना नहीं चाहिए था। डैमेज, इसीलिए ये पूरा दुनिया में यही पॉलिसी, सिर्फ इंडिया में नहीं है सर। वन एक प्लस साल तो का दे रहा वारंटी है, वन इसीलिए प्लस तो देता है। अपने सॉफ्टवेयर डिवाइस, जो डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर इशू आ रहा है, ग्रीन लाइन इशू, वहाँ पर तो लाइफ टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट दे रहा है। सैमसंग भी कुछ कुछ केस में कंसीडर कर रहा है, वीवो भी कंसीडर कर रहा है, ओप्पो में भी यहाँ पर रिप्लेसेबल ऑप्शन है अगर सॉफ्टवेयर के कारण हो। तो आप बोल रहे हैं ग्लोबल पॉलिसी, तो ग्लोबल पॉलिसी तो ये नहीं है। नहीं नहीं, मैं एप्पल का पॉलिसी बता रहा हूँ, मैं दूसरा ब्रांड का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम उसके ऊपर ट्रेन नहीं है ना। एप्पल के हिसाब से 1 साल का वारंटी इसीलिए देता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कभी कभी क्या होता है आपका लोकेशन पे कहीं पे पावर फ्लक्चुएशन हो सकता है चार्ज करने के टाइम पे, या कुछ भी होने का चांस है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसीलिए 1 साल का वारंटी हम देता है, ताकि डिवाइस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको वो 1 साल के अंदर हम करके देता है। और अभी तो एक्स्ट्रा वारंटी भी आ गया है, जो आप जैसे ही नए डिवाइस खरीदेंगे ना, तो ये पहला साल तो कंपनी खुद देता है, दूसरा साल का आपको लेना पड़ेगा। As the screen cost around 26,000 rupees, it is not advisable to replace the screen at the service center. Though I have not yet visited the service center, I will visit the service center in coming days and then I will decide whether I would replace the screen at the local market or at the authorized service center. However, during my conversation with the Apple executive, he never accepted the fact that my display got black after the software update. He told me that they also had updated to the latest version, but they never faced such kinds of issue with their iPhones. Before iOS 17.4.1, my iPhone also was performing very well. The camera was
excellent. There was no issue with the cameras. There is no heating issue. These are the images of iOS 17.3. As you can see here, there was no problem whatsoever. As I had faced no issue in previous updates, I thought that 17.4.1 will also be very good, so I updated to the latest version, but alas, there is issue in the display, as you can see, and now I have to bear the cost of screen replacement. This is very pathetic for average Apple users. Whenever a user pays a hefty amount to buy iPhones, and if the iPhone is out of warranty, they have to bear the cost of screen replacement or any kind of damage. This is not acceptable. Brands like OnePlus are giving lifetime screen replacement whenever there is an issue after software update. So Apple also fixed this issue by providing free screen replacement. What's your thought regarding this issue? Let me know in the comment sections below. Do any one of you face the screen issue after software update? Do let me know in the comment sections below. In coming videos, I will tell you about the cost of screen replacement, because I am going to replace the screen at the local store after visiting the authorized service center. So if you are interested to know about the cost of screen replacement, stay subscribed and hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much for watching this video. Have a great day.